एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। 31 दिसंबर को हम निकले थे ग्लोबल विलेज न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखने। हम कहीं और जाएंगे बोल के प्लान किए थे, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा था गूगल मैप में। इसी वजह से हम लोग ग्लोबल विलेज ही आए। ग्लोबल विलेज के रास्ता क्लियर था, इसी वजह से हम इधर 7 o'clock ही रीच हुए थे। हम इस बार तो किसी पेविलियंस के अंदर नहीं गए थे, बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल में अपलोडेड है। और इधर क्रिसमस डेकोरेशन तो बहुत अच्छे से किए थे। इस बार मुझे फर्स्ट टाइम दुबई में न्यू ईयर सेलिब्रेशन मिला। हर बार तो मैं इंडिया में रहती हूँ। 2024 एंड होके नया साल आ भी गया और हमें पता ही नहीं चला। ज़िंदगी में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। सब अच्छे मेमोरीज़ को लेके, हैप्पी मेमोरीज़ को लेके हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। इधर किड्स थिएटर में बच्चों के लिए प्रोग्राम चल रहा था। मैंने तो 2024 में बंद किया हुआ मेरा यूट्यूब चैनल फिर से ओपन की हूँ। थोड़ा मुश्किल है, दो छोटे छोटे बच्चों को भी संभालना है और यूट्यूब को भी टाइम देना है। मैंने ठान लिया है, कुछ तो करना है, आगे बढ़ना है और आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। आगे देखिएगा, यूएई टाइम 8 o'clock होने में फर्स्ट फायरवर्क चाइना का हुआ। सब कंट्रीज़ के उधर 12 o'clock होने में इधर फायरवर्क हो रहा था। थोड़ा भूख लग रहा था, सो सबका फेवरेट बी11 ट्राई किए। उसके बाद हम लोग एक जगह ढूंढ के उसमें जाके बैठ गए। आफ्टर 9 o'clock बहुत रश था, आप इधर देख लीजिएगा। और हम ग्लोबल विलेज आए और बोस्निया हाउस में फूड ना खाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और फूड लेके हम जगह ढूंढ रहे थे। बैठने को कहाँ भी जगह नहीं मिल रहा था। ग्लोबल विलेज आने का एक खुशी अलग, बट इधर चल चल के पैर ही दर्द करने लगता है। कहाँ बैठने को जगह मिलेगा बोल के ही ढूंढते हैं। यहाँ तो फ़ोटोज़ अच्छा आता ही है। अलग अलग कंट्रीज़ के पेविलियंस के बाहर रुक के हम लोग वो फ़ोटो खींचते हैं। इससे पूरा वर्ल्ड घूमने का मज़ा ही अलग है।
अभी हम वेट कर रहे थे यूएई का फायर शो। تامر ما كاتبينها في السما. फायरवर्क के बाद ड्रोन शो स्टार्ट हुआ।
12:30 के बाद हम निकले और गरिचोने में 2 o'clock हो चुका था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ओके गाइस, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel